How's it going, everybody? Gaurav, Bhatt and Mihir, Vasavda here. You're listening to the Express Sports Podcast and it's game time. I am a happy man today because we will be talking about boxing. I'm also unhappy because there's not a lot good to say about boxing. For an Olympic original sport, for a sport that has given the world a number of heroes and great champions, for a sport that is so universal and primal and so intrinsic, it is so sad that boxing is largely treated with indifference and confusion आजकल. Anyway, तो हमने सोचा आज बॉक्सिंग की बात करें. Everything under the sun in the ring, professional boxing, amateur boxing. What is ailing the two streams? Why the aforementioned indifference towards boxing? To talk about this, in the blue corner we have the great Mihir Vasavda, of course. Mihir, what's up? As incidental as it is, I'm wearing a blue t-shirt right now. इंसिडेंटल नहीं यार, ये 2 साल हो जाते हैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हुए, तो ये सब टेलीपैथी चलने लग जाती है. एकदम एंड तूने आई थिंक बहुत ही रेटोरिकल क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई बॉक्सिंग इज मेट विद सच इंडिफरेंस. आई थिंक वो व्हाई का सिर्फ एक ही जवाब है, गौरव, एंड दैट इज जस्ट शेडीनेस ऑफ इट ऑल. But what is पहला पंच मेरा? Yeah, पहला, and I'm already feeling knocked out this. अभी यहाँ पे क्या ही बोले, क्या जवाब दें. It's difficult to bat for a sport that you love so much, but still, yeah, let's discuss why we decided upon this topic and generally the major angle, major peg that was Floyd Mayweather's return to the ring at the age of 44. He had retired from professional boxing with a perfect 50 wins from 50 fights record back in 2018. Though वो 50th win पे भी थोड़ा asterisk आप लोग लगा दीजिए because it came against the MMA great Conor McGregor. But still, that was a boxing match with rules, with decision, and he knocked out McGregor. अभी इस time में he fought a guy which is difficult to explain हम लोगों के लिए, जितने भी यहाँ पे millennials और boomers और जो भी लोग सुन पा रहे होंगे. If you are product of the Gen Z, then you may know Logan Paul, who is a YouTube personality, and that's as far as I'm going to go on his curriculum vitae. मेरे को ज़्यादा idea नहीं है, but he is known for his massive YouTube following, for having millions of followers, and he and his brother Jake Paul, उसकी भी हम बातें करेंगे थोड़ा आगे एपिसोड में. But these guys have suddenly found love for professional boxing, for being in the ring. They have been training. This guy apparently was state level wrestler before, but the fight was absolute shambles यार. मतलब it was beyond embarrassing. आप किसी भी तरीके से देखें उसको. And I try to be an edgelord in as many cases as possible कि skateboarding, rapping, सब कुछ Olympics में डाल दो. Professional boxing में भी यार it's never been so sacrosanct कि suddenly you start clutching your necklaces कि ऐसे लोग क्यों आ रहे हैं. But when you see a fight like this, when 8 rounds are spent hugging each other more than punching, when Floyd Mayweather is not able to knock out this amateur guy, then suddenly you sit back and realize कि यार कहाँ जा रही है boxing. तो मिहिर, I am almost 100% sure, just like I was sure कि तूने blue पहना हुआ था आज, कि तूने ये fight भी शायद नहीं देखा था पूरा, है ना? Of course यार, मैंने मेरी नींद में देखा था. गौरव यार, मैंने एक चीज जो लाइफ में कभी नहीं किया है वो है मेरी स्लीप सैक्रिफाइस करके बॉक्सिंग मैच देखना. एंड देयर इज अ गुड रीजन फॉर इट, जो ये मैच ये बाउट में ही एक्सप्लेन हो चुका है. आई डोंट ट्रस्ट व्हाट आई सी इन बॉक्सिंग most of the times, not always, especially in pro boxing, right? So it is a bit like pro wrestling for me. The only reason I got to know about this bout was the outcome that you explained. अब मुझे ये एक अंदाजा था कि Mayweather is going to fight a YouTube sensation. Like you mentioned, Mayweather 50 out of 50 wins. The YouTuber 66 million, I think, subscribers. तो ये जो figures थे, ये थोड़े से jarring थे for me going into any boxing match. And when I got to know कि Mayweather नहीं जीत पाया है, I think that just reinforced that belief in me कि यार pro boxing is full of shit. ये तो नहीं हो सकता. And I'm sure I'm not the only one feeling that, right? I mean, I was seeing a few clips of the bout and you could hear the crowd booing after the result was declared. And Gaurav, you have seen this bout, you've seen other bouts, and I'm sure you were also left scratching your head जब decision announce हुआ उसका.
I was not just scratching my head, but it was almost. Then there's nothing to talk about. You know what I'm trying to say? If Mayweather is fighting this YouTube guy, the headline should have been कि Mayweather knocked this guy out, or by whatever luck, Mayweather of course is 44. Like I said, this guy knocked him out. By the way, guys, he was 35 pounds heavier. He is 4 inches taller. He is almost 20 years younger. सो जो मिहिर तुमने जो पॉइंट उठाया इट्स वेरी वैलिड एंड विल गेट टू दैट ऑल्सो, बट इसमें तो जजिंग की भी कोई बात नहीं थी यार, क्योंकि हाउ कैन यू स्कोर पॉइंट्स, हाउ कैन यू काउंट पंचेस व्हेन देयर इज नो पंचेस, एंड हगिंग के कितने पॉइंट्स मिलते हैं ये आई डोंट नो, बट दीज टू गाइज वर क्लिंचिंग ईच अदर. और ये बड़ा वाला लड़का तो अगर डाल दे रहा था मतलब हाथों में हाथ और गले पड़ जा रहा था, देन तो इट वाज बीइंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मेवेदर टू श्रग हिम ऑफ. बट थिंग इज इट वाज एब्सोल्युटली ब्ला, लाइक कुछ नहीं मिला इसमें. एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हिज यंगर ब्रदर जेक पॉल, हु लुक्स एटलीस्ट स्लाइटली मोर सीरियस. ही ऑल्सो हैज हिज साइट सेट ऑन फ्लॉयड मेवेदर. और जब ये फाइट अनाउंस हुआ था, एंड आई एम फीलिंग सो एम्बैरेस्ड राइट नाउ कि मुझे इतना सब इन्फॉर्मेशन इतना नॉलेज इन दोनों बंदों के बारे में है कि जब ये फाइट अनाउंस हुआ था, देन जेक पॉल जो कि यंगर ब्रदर हैं लोगन के, वो मेवेदर से उलझ बैठे, उन्होंने उनकी टोपी चुरा ली. एंड देन द थिंग दैट वाज ट्रेंडिंग वर्ल्ड वाइड फॉर अपवर्ड्स ऑफ 12 आवर्स वाज गॉट योर हैट. और 2 घंटे के अंदर ही वो हैट चुराने के बाद में देयर वाज मर्चेंडाइज ऑन जेक पॉल्स वेबसाइट, गॉट योर हैट कैप्स दैट वाज सेलिंग फॉर पता नहीं कितना ही डॉलर्स, एंड चिल्ड्रन क्राइंग ओवर इट बिकॉज वो प्री ऑर्डर नहीं कर पा रहे थे या सोल्ड आउट हो गया था ऑलरेडी. इट हैज बिकम दैट, इट हैज डिवॉल्व्ड इनटू दैट. उसका अगला स्टेप तब होता अगर इन दोनों में से एक भी कोई नॉकआउट होता है या कुछ हमें कुछ इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ अक्षय कुमार इन हेरा फेरी कुछ कुश्ती उस्ती देखने मिलती, कुछ मजा आता, कोई पिटता तो. बट ऐसा हुआ नहीं. तो उसके बाद में अभी सडनली जो पूरा नैरेटिव है कि नहीं यार मतलब एक्साइटिंग होती है बाउट, प्रोफेशनल बॉक्सिंग नीड्स दिस, प्रोफेशनल बॉक्सिंग नीड्स अ शॉट इन द आर्म, इट नीड्स द सेलिब्रिटी बॉक्सर्स. सडनली व्हेन यू रियलाइज कि यार बाउट भी बोरिंग था, जो लोग वहां देख रहे हैं वो भी बू कर रहे थे, तो डज प्रोफेशनल बॉक्सिंग रियली नीड ऑल दी सेलिब्रिटी बॉक्सर्स? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन राइट नाउ. एंड आई डोंट नो मिहिर, तुम्हें कितना पता था ये पॉल ब्रदर्स के बारे में बिफोर दे जंप्ड इनटू बॉक्सिंग, और अभी भी कितना पता है आफ्टर दे हैव जंप्ड इनटू बॉक्सिंग फॉर क्लोज टू 2 years नाउ? बिल्कुल नहीं और बिल्कुल नहीं. एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट ईदर ऑफ दीज गाइज. मैंने कोशिश भी नहीं की है टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई मीन आई एम नॉट मच ऑफ अ यूट्यूबर. थोड़ा बहुत ट्विटर देख लेता हूँ, इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, दैट्स अबाउट इट. एंड प्रोफेशनल बॉक्सिंग लाइक आई सेड ज़्यादा नहीं. तो जब भी मेवेदर और लोगन की बाउट अनाउंस भी हुई थी, इट डिडंट रियली कैच माई फैंसी. ऐसा नहीं था कि मैं क्विकली जाके गूगल सर्च किया कि हु इज दिस लोगन पॉल और क्या है ये बंदा, क्या करता है. सो इट वॉज प्रीटी मच blank to me everything, but the whole idea of it, right, everything that we discussed, for a second I did not imagine कि Mayweather would not win this bout. And काफी naive thinking था, because you also think of boxing in terms of the money that is on the line. I'm sure even if Logan Paul or Mayweather would have lost that match, they would have gone home richer by several $100 million. But a draw gives them an opportunity for a rematch and make even more money. And people, I think, काफी stupid enough we had to pay to watch them again and get fooled by doll. That's the funny part. There was no draw. There was no decision because decision यहाँ होना ही नहीं था. Nobody was going to win. Nobody was going to lose. Points पे only thing was कि यहाँ पे knockout हो सकते थे. That's why everybody was trying to jump on the Mayweather bandwagon कि यार चलो knock this guy out, make him shut up. But essentially it was a draw because there were no winners or losers. But the thing is now it will be spun into, and it has already begun कि how Logan Paul, no, I survived 8 rounds against the greatest boxer of all time, and I have a future in this. And even Mayweather is like, no, he's much better than what I expected. The worst thing of this is, and there's so many things to pick that it's very difficult for me, but the thing is that people like Mike Tyson and even Roy Jones Jr., who made a comeback last year in an exhibition fight. Mike Tyson looked great for his age. But what was noticeable at the press conferences was how he wholeheartedly supported all these celebrity boxers, all the YouTubers. और घूम फिर के बात वही आ जाती है यार कि they are getting eyeballs.
कि they are making boxing famous again, and why you guys acting so disappointed, why you guys so sad or even angry, because real bona fide boxers aren't getting eyeballs, they aren't getting views, and these guys are. वो theory भी बहुत ज़्यादा जल्दी फुस हो जाता है यार. Like you mentioned, they'll be richer by millions of dollars, but I don't know what the buy rate is for this pay-per-view, how much it did on Google Trends or whatever, but it was such a dud कि अभी इसके बाद में लोग उल्लू बनेंगे जैसा आपने बोला, बट इतना उल्लू नहीं बनेंगे. सो इवन दैट आई बॉल इट हैज अ वेरी लिमिटेड शेल्फ वैल्यू यार. ऐसा नहीं है कि आप करते ही चले जाएंगे. हिज यंगर ब्रदर, ही फॉट अ यूट्यूबर, देन ही फॉट फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर एंड ही नॉक्ड हिम आउट सेंसेशनली, देन ही फॉट अ फॉर्मर MMA star and then he knocked him out, and now he's going to fight another MMA star. तो वो भी एक ट्रेन वहाँ पे चलती जा रही है. The only thing that breaks my heart a little, but again it's also professional boxing's own doing, कि जो actual stars थे वो नहीं निकल के आ पाते इसमें कभी भी. And तुम सड़क पे चलते हुए कभी भी किसी से पूछोगे, there was a time when you knew the world heavyweight champion. You may not know कि cruiserweight champion कौन है या welterweight कौन है कुछ, but that world heavyweight championship used to mean something, from Mike Tyson's to Muhammad Ali's and them all. And now it's very difficult क्योंकि इतना ज़्यादा belts हैं, 5 उसके पास हैं तो 3 उसके पास है तो 2 उसके पास है, lineal वो है भैया, बट उसका वहाँ rematch फंसा हुआ है. It's very difficult to follow narratives. It's very difficult to care for professional boxing now, and I think that's what's ailing professional boxing यार. And it's not just professional boxing, right, Gaurav? I mean, अगर जो हम देखें तो boxing overall, even Olympic style boxing हम देखें, again as coincidence, हम ये देखें just the previous week, I think it was, we saw it happen in an amateur boxing bout with one of India's boxers, Amit Pangal. Again, to me, it seemed like Pangal, even though he did not win the match, the way the rounds were judged, that looked extremely different to what I expected. I mean, जैसे अगर जो हम स्कोरिंग कार्ड्स उसके देखें तो एटलीस्ट कपल ऑफ राउंड्स आई थॉट कि पंगल काफ़ी क्लोज गया था एंड ही वॉज इन गिवन दोज राउंड्स, एंड दैट्स माई प्रॉब्लम विद बॉक्सिंग एज अ स्पेक्टेटर. सो दिस बाउट वी आर टॉकिंग इज अगेंस्ट ज़ोइरव शाकोव अगेंस्ट ऑफ उज़्बेकिस्तान, एंड एज अ स्पेक्टेटर इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे स्कोर हो रहे हैं बाउट्स, आई लूज इंटरेस्ट. आई मीन, अगर जो हम फुटबॉल देखें तो हमें पता है कि बॉल नेट के अंदर जाएगा तो ये गोल है. क्रिकेट में हमें पता है कि अगर जो आप एक बार भागोगे तो 1 रन है, एंड यू नो इफ इट्स अ विकेट तो 1 जन आउट होगा. इन बॉक्सिंग अगर जो मुझे दिख रहा है कि सामने वाला पंच कर रहा है, बट इफ द जजेस सिटिंग ऑन द रिंग साइड हैव अ डिफरेंट व्यू, देन इट्स नॉट recorded as a punch, and I think that's quite weird, right? Almost there, we are almost in Tokyo at the Olympics. These guys, Amit Pangal and all, they will be our medal contenders there, and for general public to care about Amit Pangal, to follow him closely, to care about the color of medal that he should win at the Olympics, they need to know about the rules. They need to know how the scoring is done. Boxing में यार इतना एम्बैरेसिंग हो जाता है कितनी बार मिहिर, कि आप चाहे अपने वर्क प्लेस की बात करें, चाहे आप घरों में आप अपनी फैमिली देख रही हो आपके साथ में, चाहे आपके दोस्त लोग देख रहे हो, अगेन वी हैव टू मेक दिस डिस्टिंक्शन दैट वी आर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. इट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब. हमें रूल्स ध्यान रखने पड़ते हैं कि क्या है, एंड इवन वी आर बैम्बूजल्ड, है ना. हम लोग भी अभी हैरान है कि एक्चुअली में क्या हुआ, या अच्छा क्या स्कोरिंग था, ये क्यों हुआ, क्या जज ने कौन सा राउंड किसे दिया. फॉर अ मेंबर ऑफ द जनरल पब्लिक हु जस्ट स्विचेस ऑन द टीवी कि यार ये अमित पंगल का बढ़िया बॉक्सिंग बाउट है, देखते हैं. इट्स सो एम्बैरेसिंग बिकॉज आई वॉज देयर एट अमित पंगल्स हाउस होल्ड इन माइना विलेज इन रोहतक इन 2019, जब अमित पंगल वहाँ रशिया में 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के फाइनल में थे. और यहाँ यार दिन से ही लोग आ रहे हैं, गांव से दूर दूर रोहतक से पैदल चल चल के लोग आ रहे हैं. वो जो घर के आगे थोड़ा सा एरिया था उसको उन्होंने जल्दी जल्दी कुर्सियाँ लगाई हैं. ये सब मेरे सामने हो रहा है और टीवी लगा दिया, बट बॉक्सिंग इज नॉट शोन ऑन एनी चैनल बिकॉज हु द हेल केयर्स अबाउट बॉक्सिंग. तो वो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम हो रहा है. दे ट्राइंग टू फिगर आउट कि कास्ट कर पाएंगे कि नहीं. अरे आपका तो टीवी स्मार्ट टीवी नहीं है, तो किसी पड़ोसी के घर से एक स्मार्ट टीवी आया है. एंड आफ्टर ऑल दैट इट लास्ट फॉर एसेंशियली 10 मिनट्स. और उस 10 मिनट में दे आर ट्राइंग टू चेयर, दे ट्राइंग टू टॉक टू ईच अदर कि यार वो लगा था कौन जीत रहा है, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, वो जीत रहा है कि नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा है. आई थिंक पंगल जीत रहा है या अमित ने मारा है, देखो देखो. एंड एट द एंड ऑफ द टाई आपके ज़ोइरव का हाथ उठा दिया जाता है. दे आर ऑल्सो डिफ्लेटेड यार, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट दैट आवर गाय लॉस्ट, बट ऑल्सो द डिसअपॉइंटमेंट दैट वी डोंट इवन नो हाउ आवर गाय लॉस्ट. अब
आप लोग अगर सुन रहे हैं और आप लोग जानना चाहते हैं थोड़ा सा स्कोरिंग, में जल्दी जल्दी समझा दूं। बॉक्सिंग में अभी क्या होता है कि देयर इज अ 10 पॉइंट मस्ट सिस्टम। एक राउंड होने के बाद में एक जज जो है, जो उन्हें लगता है कि ये बॉक्सर जीता है, दे विल अवॉर्ड देम 10 पॉइंट्स। द अदर वन इज गिवन 9, 8, 7 पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द वन साइडेडनेस ऑफ द राउंड। अब होता क्या है कि यार ये सब आपके जितने 10, 9, 10, 8, 10, 8 बहुत रेयर है, बट 10, 9, 9, 10 ये सब जो दिखाए जाते हैं वो मैच के बाउट के एंड में दिखाए जाते हैं। एंड इट्स सो सब्जेक्टिव बिकॉज पंचेस काउंट नहीं होते हैं, पंचेस की काउंटिंग नहीं होती है, रिंग जनरलशिप की काउंटिंग होती है, क्वालिटी ऑफ ब्लोज काउंट होते हैं, क्वांटिटी कई बार नहीं होती है, और किसने कितना डिफेंस दिखाया है, एंड इवन वेग ओपन एंडेड थिंग्स यार कि स्पिरिट किसने कितना दिखाया है, हु वाज ओवरकमिंग द चैलेंजेस, हु शोड द कम्पिटिटिव स्पिरिट। अरे मतलब इतने लोग वहां से लड़ झगड़ के अपने देश के सबसे टॉप बॉक्सर्स हैं, एवरीबडी शोइंग द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। सो आई डोंट इवन नो व्हाट द थर्ड पॉइंट इज जिस पे जज किया जाता है कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कितना था, कितना उनमें जिगर था कि वो उन सब हालातों के अगेंस्ट लड़के आ गए। एंड दिस इज इन 3 मिनट्स। 3 मिनट में ख़त्म होते ही एक जज को उसे क्वालिटी भी याद रखना है, किसने कितना अच्छा मारा था, उसे क्वांटिटी का भी कहीं ना कहीं याद रखना है कि किसने कितना ज़्यादा मारा था, किसकी टेक्निक ज़्यादा अच्छी लग रही थी, हु वॉज द फ्लैशियर, किसके पंचेस में दर्द कम हो रहा था, बट यू नो ही वॉज चेक हुकिंग, जिससे कई बार रोक देते हैं सामने वाले को, बट उतना तेज़ यू नो द हेड डजंट स्नैप बैक, तो लगता नहीं कि बहुत तगड़ा पंच है। फिर उसके बाद में आपको उसका जज्बा भी देखना है, एंड यू हैव टू डू ऑल दिस एंड स्कोर द राउंड विद इन 15 सेकेंड्स ऑफ द एंड ऑफ द राउंड। तो यार इससे हो क्या जाता है कि इतना सब्जेक्टिव हो जाता है कि एक ऑब्जेक्टिवली जो हमें ये वाला मैच पता था कि यू नो पंगल वॉज अहेड, पंगल शुड हैव बीन अहेड, पंगल शुड हैव वन द गोल्ड मेडल एट द एशियन चैंपियनशिप्स, सडनली वी हैव नथिंग टू डू अबाउट इट। जो फेडरेशन है, जो टीम है, उन्होंने प्रोटेस्ट करा था कि आप प्रोटेस्ट डाल सकते हैं, बट अगेन इट्स सो सब्जेक्टिव कि अनलेस कुछ डे लाइट रॉबरी हुई है, योर प्रोटेस्ट इज नॉट गोइंग टू बी अपहेल्ड, यू नो इट्स गोइंग टू बी टर्न डाउन। कोई अपने जजेस को बेवकूफ़ नहीं दिखाना चाहता। बट मिहिर, ये तो वो केस है जब हमें पता था कि ऐसा हुआ है, और चलो अब कहीं ना कहीं जबकि हम ऑब्जेक्टिव हैं, बट कुछ लोग लिसनर सोच भी सकते कि यार आप तो सोचेंगे कि अमित जीता है क्योंकि अगेन इंडियन एक्सप्रेस या वॉट एवर। बट इससे पहले जितने पास्ट इंसिडेंट्स हुए हैं, एक तो आपने काफ़ी क्लोज क्वार्टर से देखा हुआ है जिसमें तो कोई इंडियन भी नहीं था, बट ऐसे भी बाउट्स, ऐसे भी डिसीजंस हुए हैं कि उस टाइम भी समझ में आ जाता है कि यार फॉलो करने में मज़ा नहीं है, बाद में रिजल्ट्स में देख लेंगे कौन जीता है कौन नहीं। एग्जैक्टली गौरव, एंड ये जो चीज़ है ये अभी से नहीं है, इट्स समथिंग दैट्स बीन हैपनिंग इवन बिफोर वी वर बॉर्न। अगर जो 1984 ओलंपिक्स की बात करें तो इवेंडर हॉलीफील्ड, हु वाज वेरी नाइस ग्रेट ओलंपिक लेवल बॉक्सर बिफोर ही टर्न प्रो, उसकी बाउट अगेंस्ट न्यूजीलैंड्स केविन बैरी 84 ओलंपिक्स भी ऐसा था कि हॉलीफील्ड वाज अनस्टॉपेबल इन द फर्स्ट कपल ऑफ बाउट्स। वो मतलब नॉकआउट से हरा रहा था। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, उसने फर्स्ट राउंड में गाना के एक बॉक्सर को हराया था, सेकंड राउंड में ही बीट दिस बॉक्सर फ्रॉम इराक। एवरीथिंग वाज बाय नॉकआउट, एंड देन ही इवेंचुअली मेट बैरी इन दिस व्हाट इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट बाउट्स ऑफ ऑल टाइम, जहां पर हॉलीफील्ड ने उसे एकदम फोड़ दिया था, सब कुछ उसने एकदम मार मरोड़ के उसे गिरा दिया था। And it almost felt like Holyfield is going to win that bout, पर फिर रेफरी रोक देता है and he says कि Holyfield ने जो एक पंच मारा है that was illegal, and then the bout was awarded to Barry. So the arbitrariness of that decision shocked everyone. ये हो गई 1984 ओलंपिक्स की बात। अगर जो हम सबसे बड़ा स्कैंडल बॉक्सिंग का हम देखें तो it came in 1988, the Seoul Olympics, the Jones versus Park bout. काफी ये मतलब फिक्सिंग कहो या पोर जजिंग कहो या whatever word you can use for it, but ये काफी legendary status है इस bout का in history of Olympics, because रॉय जोन्स जो थे उन्होंने साउथ कोरियन बॉक्सर पार्क होम ओलंपिक्स फाइनल में 86 punches to 32 के हिसाब से he had beaten according to the count, and like you said कि अभी 10 point scoring system है, at that time it was every punch, तो 86 to 32 count था, but eventually it was Park who surprisingly was named as the winner and he won the gold medal. It took 1 decade for the International Olympic Committee
to complete their probe, and they confirmed everyone's suspicions कि South Korean officials जो थे they had paid off the judges and the bout was fixed. Yet Park was allowed to keep the gold. And this was a period जो 80s और 90s का जो period था, ये बॉक्सिंग का सबसे एक डार्क फेज था एमेच्योर बॉक्सिंग का, ओलंपिक लेवल का. दिस वाज द टाइम व्हेन देयर वाज पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटर नेम्ड अनवर चौधरी जो प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के. एंड almost every bout was suspicious. At least every big Olympic level bout was suspicious at that point. And things did not change. I mean, when Anwar Chaudhary was replaced by this gentleman called C.K. Wu, situation were as bad, if not worse, because I personally met and experienced what C.K. Wu's AIBA did at the London Olympics. एक bout जो हुआ था, of course, इसकी commentary which we will just play right now, वो हमने काफी बाद सुनी, but I was there at XL Arena in London to witness that bout. But before I talk about that bout, you should just listen in to the commentary and the disbelief in everyone's voice. 22 points to 17 in the unbelievable. That's what the referee wanted to do. He wanted to save that fighter. Everybody here from incredible should look at themselves and realize why this sport is considered a joke. ये बाउट थी जापान के सातोशी शिमिजू एंड अजरबैजान के मागोमेद अब्दुलहमीदोव के बीच. एंड इन दिस ऑडियो क्लिप you can hear that Satoshi Shimizu is beating his Azerbaijani opponent black and blue and all kinds of colors, but the referee does not stop the bout as is mandated, and eventually the bout is awarded to the Azerbaijani boxer. And Gaurav, this was just one bout. I can assure you that every Indian bout जो हुआ था at 2012 Olympics, after every Indian bout, the Indian chef de mission, Brigadier Muralidhar Raja, he used to lodge an official complaint. Muralidhar Raja was also a senior boxing administrator from India. And after every Indian bout, he used to go and lodge a protest. And it reached a point where in an interview, C.K. Wu told me that the way your country is behaving, you are all going to get punished. And a few months later, India was suspended from international boxing. And you have a story to tell from Rio Olympics as well, Gaurav. Yeah, so just to share with the listeners, 2012 में जहाँ तक की मिहिर बात कर रहा है, there was, क्योंकि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार पंचेस क्यों नहीं काउंट करते, तो दैट हैपेंड, 88 सोल ओलंपिक्स का जो मिहिर ने बात किया, उसके बाद में दे स्टार्टेड गोइंग टू दैट कंप्यूटराइज्ड पंच काउंटिंग, कि सारे जजेस को एक पंच लगने के बाद में जल्दी से एक बटन दबाना होता था, एंड इफ ऑल ऑफ देम डिड सो इन विद इन अ स्पैन ऑफ 1 सेकेंड, दैट पंच वुड काउंट. अब वो रूल लगता तो है कि ऑब्जेक्टिवली सही था, बट होने क्या लगा उसमें कि आफ्टर 1 राउंड अ कॉर्नर वुड टेल देयर बॉक्सर, अगर खैर स्कोर्स अवेलेबल नहीं है तो, कि यू आर अहेड, एंड देन दैट बॉक्सर वुड स्पेंड द रेस्ट ऑफ द बाउट running away. It will become a cat and mouse game because he is ahead, he is with the lead, so he's not going to start skirmishes, he's not going to go in with the exchanges. तो कंप्यूटराइज्ड की वजह से बिल्कुल अग्रेशन खत्म हो गया, तो लोग बोलने लगे यार ये तो बॉक्सिंग क्या हो रही है, एक बंदा भाग रहा है, एक बंदा उसको पकड़ रहा है. तो आफ्टर दैट एंड आफ्टर मिहिर हैड अ चैट विद सीके वू, आई एम नॉट इम्प्लाइंग कि मिहिर की बात करने की वजह से सीके वू ने ये डिसीजन लिया, बट देन ही डिसाइडेड कि नहीं यार ये थोड़ा अग्रेसिव हमें चाहिए वापस, तो दे रिवर्टेड बैक टू द 10 पॉइंट मस्ट सिस्टम. 2016 में हुआ क्या कि दिस 10 पॉइंट मस्ट सिस्टम के अंदर आयरलैंड बॉक्सर माइकल कॉनलन, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एमेच्योर फाइटर्स फॉर आयरलैंड ऑफ ऑल टाइम, वेरी डेकोरेटेड बॉक्सर, he had to turn professional after 2016 Rio Olympics, क्योंकि उनका जो बाउट था रशिया के व्लादिमीर निकितिन के साथ में 2016 रियो में, वो इतना वन साइडेड था, बट सारे स्कोर्स उनके अगेंस्ट जा रहे थे. एंड आफ्टर दैट ही said something which I'm not going to repeat. I've already used my F word quota at the Express Sports podcast, but he essentially said they are effing cheats. I'll never box for AIBA again. And they are paying everybody. और उसके बाद में बहुत ज़्यादा कार्रवाई चली जो अभी तक भी हो रही है. There are investigations going on कि यार 2016 में क्या था, और काफ़ी जजेस को सैंक्शन भी किया था कि ऐसा था करप्शन. बट जब मैं माइकल कॉनलन से बात किया, he had watched that fight at least 200 times. That's what he said. And he had already been greatly successful in the professional boxing stream.
बट ही सेड कि यार ही इज़ मच हैप्पियर बीइंग इन द प्रोफेशनल बॉक्सिंग, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को उतनी ज़्यादा उम्मीद रहती नहीं है कि यहाँ कैसी स्कोरिंग होगी, कैसी जजिंग होगी. बट एमेच्योर में ओलंपिक लेवल पे दे स्टिल एटलीस्ट हमको लगता तो है कि यार ओलंपिक्स पे तो कुछ इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा स्कोरिंग अच्छी होगी. आई जस्ट समिट अप बाय सेइंग कि यार मिहिर ने जो स्टार्टिंग में बात बोली वही सबसे इंटरेस्टिंग थी कि इफ़ यू कांट ट्रस्ट व्हाट इज गोइंग ऑन द स्क्रीन, आप प्रोफेशनल रेसलिंग देखते हैं, आप WWE देखते हैं, तो एटलीस्ट दिस दैट सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कि मुझे पता है सब बकवास हो रहा है तो मैं देख लूंगा जो भी हो रहा है. बट प्रोफेशनल बॉक्स में पूरा शो ही है कि दो बंदे आके लड़ेंगे एंड द बेटर वन इज गोइंग टू बी द विक्टर. व्हेन दैट कंसिस्टेंटली डजंट हैपन देन यू स्टार्ट टू लूज ऑल होप. At this point, I would like to bring in producer Shashank. Shashank, boxing is, at least on paper, it should be an accessible sport, right? Two people are in there trying to beat each other to a pulp. But तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या opinion है? And if you have followed boxing at all, and if there have been any bouts that you saw, which उसके बाद लगा कि हाँ नहीं ये समझ से बाहर है. I actually haven't seen boxing that much, except in movies. In movies, I've seen it. And in fact, movies में भी इतना explain नहीं करते हैं. Like I'm remembering, I don't know, Cinderella Man, and उसमें भी scoring कुछ ऐसा complicated तरीके से नहीं दिखाई है. And before this, I honestly thought it's literally somebody would be counting punches, or if somebody gets knocked down, then it's your typical, that referee pounding the ground for 3 times and saying ting, 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 and it's done. That's how my imagination of boxing is. But clearly that's not the case, and in fact it seems that it should be very technical and very precise, but it's clearly not. It's like it should be science, but it's part art. How do you judge art? Every judge would have a different interpretation, right? And that's what seems to be happening here. And also what I'm really surprised about is that there seems to be some rules in place so that boxing continues to remain entertaining. At least that's what my interpretation is right now, where you don't want the boxers to know ki, hey, you are ahead. Otherwise, they won't put in their best. Otherwise, the whole round will be just sort of silly ki, they're trying to run away or whatever because they're already ahead. But you want, I'm guessing, the audience to be entertained and this entire thing to be a bit theatrical, and just that intensity should be there. So, yeah, this is all surprising to me. I loved how your mix of boxing in your mind was a mix of गली में लड़ाई हो रही हो, somebody's counting punches, and उसके बाद में Undertaker की कोई fight की 1, 2, 3 referee goes and then ting ting ting. But yeah, I think movies have done काफी injustice to the sport of boxing, which ironically it's called the sweet science, है ना मीर? It's called sweet science. It's on absolute polar opposite to art on this spectrum, but hence our desperation and our disappointment that it has become so subjective to some point. एक पॉइंट इसमें मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि द राइज ऑफ अदर कॉम्बैट स्पोर्ट्स, अभी आप UFC MMA देख सकते हैं जिस पे मतलब लोग खून ही देखना चाहते हैं या कुछ ऐसा कुछ देखना चाहते हैं टू गेट देयर एड्रेनलिन फिल, या फिर आप YouTube पे जाके एक्चुअल फाइट्स का कंपाइलेशंस देख सकते हैं, सड़क पे चलते हुए कोई लड़ाई हो रही है. सडनली बॉक्सिंग उतना ज़्यादा उस तरीके से भी इंटरेस्टिंग नहीं रहा यार, टू दैट सॉर्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन फ्यूल्ड कि अरे बॉक्सिंग होगी, थोड़ा खून वून निकलेगा, देखने को आएगा. So I guess, I don't know if that also contributes to the downfall. Mihir, any closing remarks? I just hope like Tokyo is just around the corner. So hopefully we'll see better judging this time. And Rio, we had seen how many judges were taken away from duty because of the way they judged the bouts, and Tokyo, we hope कि ऐसा ना हो, and there is also a reason for being a little optimistic. Although I don't know, थोड़ा सा naive भी है ये, पर reason ये है कि AIBA, the International Amateur Boxing Federation, is not in charge of boxing in Olympics, and instead it is a committee formed by the International Olympic Committee. So under them we can hope कि शायद better हो, but again we shouldn't forget कि the people involved in boxing, the referees, the judges, boxers, coaches, they are still the same. Absolutely. On the topic of the Olympics, next week onwards, we'll also start doing in-depth episodes surrounding the Tokyo Olympics. Super cool guide of sorts, mentioning, sports to watch out for, our top athletes and medal contenders and how they're stacking up this close to the games. But yeah, more on that next week, guys. Till then, stay tuned and stay safe. Adios.
You were listening to Express Sports by the Indian Express. This week's show was edited and mixed by Suresh Pawar and produced by me, Shashank Bhargav. If you like the show, then do subscribe to us wherever you get your podcasts. You can also recommend the show to someone you think will like it, share it with a friend or someone in your family. It's the best way for people to get to know about us. You can also tweet us at Express Podcasts and write to us at podcasts@indianexpress.com.